Hello friends, good morning. Welcome to market discussion with SD. But एक बार before हम लोग market discussion में जाए, I would like to pray मेरा prayers मैं देना चाहूँगा to the war victims or the conflict victims. Currently, we are at war with Pakistan, though there has not been any official statement कुछ भी नहीं हुआ. But the way the attack, both sides have been attacking, it is clear that we are almost at war. It may not be a full scale, all out war, but it is a war. It all that started with the Pahalgaon incident se hua, which was extremely terrible. और उसके बाद हमें रिटेलिएट करना ही था. We destroyed the militant camps, though it was crossing the line of control in Jammu, Kashmir and some in Punjab region. Pakistan retaliated by throwing projectiles, launchers, drones and missiles towards us, very important cities targeting Jammu, Batinda, many places they targeted. But we are far advanced from the Kargil India, Pakistan. New India is we are way too much powerful now. With the advanced system S-400, I have been following this S-400s happening from around 6 to 7 years now. Yeah, I think so. From when the Ukraine conflict started back in 2014, 15 area, it was starting up. So from that time, I've been following this Russian system, which is the most advanced system. उसके जरिए हम लोग protect कर पाए, and we retaliated even more sharply, destroying air defense system in Lahore. This was a serious warning to Pakistan that any further attack on India will be dealt with speed, precision, and in a ruthless manner. I am proud of my country that we were able to keep the civilian death in Pakistan side as minimal as possible. That is the attitude of our great nation. So I fully support what the action has been taken, but I fully also condemn the war. War किसी को नहीं चाहिए, at least मुझे नहीं चाहिए. War is bad for everyone and especially for the common people. So I want the war to stop as soon as it can, but at the same time, I fully support my country and whatever action our leaders, our military leaders, they will think is suitable, and I think we all should support that and also condemn the war at the same time. हमें चाहिए एक peaceful solution. Now let's come back to the trading. ये हुआ recent happening के बाद, which was very important. Trading में अब एक difference that we are in trading. In trading, I'm not supposed to hold opinions. I can have opinions, but I should not bet on my opinions. So trading, it is important. Whatever has been happening, I may not like Pakistan. I do different. May have hold anger or other stuff. But as a trader, I will take as is. But as is मतलब जैसा हुआ है, like a neutral body, thinking more about the cause and effect, looking at the price behavior and taking actions. और कुछ लोग पूछ सकते हैं एक वॉर टाइम में बाई सेलिंग का बात क्यों होगा, एक वॉर टाइम में स्टॉक का बात क्यों होगा. ये इसलिए होगा, ये स्टॉक का वेल्थ एंड अदर वेल्थ, दिस आर वेल्थ जो हमारे कंट्रीज क्रिएट कर रहे हैं. The more distributed it becomes by at least improving general knowledge, जैसे यूएस में हर सिटीजन को with 401k they are invested in the equity market. We have nothing like that in India. हमारे पास वैसा कुछ नहीं है कि हमारे जनता की जो वेल्थ हो ऑटोमेटिकली स्टॉक मार्केट के साथ ग्रो.
तो जनरली ये नॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन एंड आप लोग का भी पार्टिसिपेशन, आई थिंक इट कुड बी लॉन्ग टर्म हेल्दी इन डेवलपिंग, इम्प्रूविंग आवर कैपिटल मार्केट, और साथ में हम लोग भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये जो डिस्कशन है दोस्तों, इसमें मैं देखने वाला हूं ओवरऑल मार्केट का हालत, स्टॉक मार्केट का, एंड लाइक निफ्टी 500 स्मॉल कैप और एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, एक मेजरमेंट करेंगे। हाउ एंड आल्सो लुक एट ऑप्शंस इन द वेरी एंड, व्हाट्स टेलिंग आवर ऑप्शन मास्टर टूल, ये भी हम लोग देखेंगे। सो फर्स्ट आई स्टार्ट इन द वीकली लेवल एंड आई स्टार्ट विथ निफ्टी। निफ्टी का चार्ट पे आई प्लेस द रिस्क मास्टर फर्स्ट। रिस्क मास्टर में रीडिंग में हैज नथिंग मच चेंज्ड वीकली, इट इज ब्रॉडली सेफ फॉर इक्विटी। हाउएवर स्लाइट रिस्क ऑफ, इसको लेके कुछ कंफ्यूजन रहता है। रिस्क ऑफ होने का मतलब यू शुड नॉट टेक हायर रिस्क ग्रोथ एसेट्स लाइक इक्विटीज। ये कॉमन टर्म्स है। आज एक कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट्स ने पूछा था कि रिस्क ऑफ मतलब रेड क्यों। रिस्क ऑन का कॉन्सेप्ट है कि आप रिस्क लो, यू टेक हायर रिस्क। दिस इज वेरी कॉमन टर्म इन ग्लोबल मार्केट, रिस्क ऑन एंड रिस्क ऑफ। बट मैं समझ सकता हूं कहां से ये कंफ्यूजन आ रहा है। तो रिस्क ऑफ होने का मतलब ज्यादा रिस्क मत लो, रिस्क आर नॉट वेल रिवॉर्डेड, लेट्स से एट दिस टाइम। सो ओवरऑल सेम, बट इंडिया में कंसर्न है जो दिखा रहा था काफी टाइम से, एंड वी आर इन अ रिसेशनरी साइकिल, ये भी एक मेजर कंसर्न है। सो ये दो में कंसर्न, बट शॉर्ट टर्म आई सी रिलेटिवली वीकली चार्ट के बेसिस पे नॉट सिग्निफिकेंट राइज इन रिस्क। इन इंडिया हाउएवर थिंग्स आर चेंजिंग। ये मैं पीछे लाइन चार्ट एडजस्ट कर दे रहा हूं। लेट मी शो यू हाउ द रीडिंग्स हैव चेंज, तब जाके आप समझ पाओगे। लेट्स गो टू द बॉटम, ऑलमोस्ट नियर द बॉटम पे हम लोग चले जाएंगे। रिस्क मास्टर रेड और नीचे इंडिया स्पेसिफिक मीटर, वो भी अच्छा नहीं। अब देखिए बेटर लग रहा है, अब सेफ लग दिखा। इंडिया इज गोइंग गुड, आवर स्टॉक्स आर राइजिंग, बट नाउ दैट रिस्क इज मच मोर एलिवेटेड। देखिए रीडिंग्स चेंज हो रहे हैं, रिस्क इज फ्लक्चुएट हो रहे हैं हाई साइड की तरफ। अभी भी रेड नहीं हुआ, बट फ्लक्चुएशंस ग्रीन नहीं, आइदर थोड़ा कॉशन की तरफ जा रहा है। ओवरऑल एसेट क्लास के ऊपर इट इज ग्रीन, दैट मींस इवन इफ सेल ऑफ इज कमिंग, इट इज नॉट लाइकली टू बी वेरी शार्प। could be event based, if Pakistan कोई terrible attack launch किया, another round of, we may see some effect, but overall risk उतना भी significantly high नहीं हुआ, but हाँ बढ़ चुका है। इसका मतलब drawdown risk is much higher. Now we'll look at the 125 minutes, which is for short term swing. Short term swing के लिए extremely bad, fully in the red phase. Forward risk measure still rising, drawdown risk. फॉरवर्ड रिस्क मेजर जो है वो थोड़ा पहले से सिग्नल देना चालू करता है बिफोर अदर पैरामीटर्स सेट इन। सो व्हाट आई कैन से, इट इज अ रिस्क ऑफ, मतलब रिस्क से भागो, रिस्क इज नॉट गुड, टेकिंग हायर रिस्क, ब्रेकआउट इज हायर रिस्क देन बाई सपोर्ट। सो इन दैट सेंस रिस्क इज नॉट गुड। सो अगर किसी कोई अच्छे प्रॉफिट में है, प्रॉफिट वाले सौदे को उतना निकलना चाहिए तो नहीं, बट एक ओवरऑल पोर्टफोलियो का एक्सपोजर कम कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में दिखा रहा है रिस्क बढ़ चुका है, दैट मींस बिगर ड्रॉडाउन इन इंडियन मार्केट इज वेरी मच पॉसिबल। एंड आफ्टर द रिस्क मास्टर आई विल चेक आउट द एसेट मास्टर, और एसेट मास्टर में मैं चेकआउट करूंगा निफ्टी 500 एंड स्मॉल कैप्स।
और एसेट मास्टर में the setup I will use is largely the index. Index या तो fountain of gold, anyone is fine. So index setup, yeah, it is red. 125 minutes कल से रेड आना चालू हो रहा था. Yesterday it came the sell off, the signal, sell signal also, and today we are sharply selling off. की रेजिस्ट की सपोर्ट आएगा आई थिंक 21,300 के पास, एंड इन द वर्स्ट केस निफ्टी कैन ड्रॉप अराउंड 20,800 टू 20,600 के बीच. सो निफ्टी 500 विच इज अ गुड रिप्रेजेंटर ऑफ स्टॉक्स काफी प्रेशर में है. बी केयरफुल फ्रेंड्स. And given that we are in a recessionary cycle, first of all इसको हम लोग थोड़ा daily chart में observe करेंगे. There is also a sell signal. I think range bound होने का chance ज़्यादा है, but at this point nobody can say. Weekly chart भी देखेंगे, observe करेंगे weekly chart, and मैं background में line chart हटा देता हूँ. A correction, red caps के साथ दिख रहा है a major correction. If it stops sustaining below this level, say 22,000 के अराउंड अगर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, रिस्क बढ़ते जाएगा कि ये बाउंस बैक जो हम लोग देखे इट कुड टर्न आउट टू बी फॉल्स. मंथली चार्ट अभी भी बुलिश नहीं है. मंथली चार्ट इज नॉट बुलिश. इट्स आफ्टर द सेल सिग्नल. जो नेचुरल करेक्शन होता है वही चल रहा है. तो आई विल बी कॉशियस फ्रेंड्स कि डेली चार्ट में जब सेल सिग्नल आ रहा है, मे बी इट इज नॉट अ ग्रेट टाइम टू रिमेन एग्रेसिवली इनटू स्टॉक्स. लेट्स लुक एट द स्मॉल कैप चार्ट. और इसके लिए मैं सेटअप को थोड़ा फाउंटेन ऑफ गोल्ड यानी मदर सेटअप में चेंज कर दिया. Significant red portion is on the higher side. Sell signal available. Monthly chart. So weekly का जो bounce back जो चल रहा था, now we are moving to the weekly chart. ये रहा. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक sharp move turn down हो रहा है. Let me go to. ये रेगुलरली चेंज कर लेना. कैश मेमोरी स्टेल हो जाता है. रेगुलरली चेंज कर लेने से फास्ट होता है इंस्टेड ऑफ यूजिंग द टेम्पलेट. तो सिग्निफिकेंट एक ड्रॉडाउन, ये जो बाउंस बैक, इट कैन टर्न आउट टू बी फेलियर, एंड देन द स्मॉल कैप विल बिकम ओपन टू मच बिगर डिक्लाइन विच इज और विल बी in line with the recessionary cycle. So overall stocks में I think there are reasons. Specifically it is not all around game. बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा. क्यों? देखिए निफ्टी का अगर हम लोग मंथली चार्ट देखेंगे, अभी तक देख रहे थे स्मॉल कैप देखे, निफ्टी 500 देखे, बट नाउ इफ यू आर लुकिंग एट द निफ्टी का अगर मंथली चार्ट हम लोग देखेंगे, वी कैन सी that it is much stronger than Nifty 500 या small cap. तो ये मैं लास्ट वीडियो में भी हाईलाइट किया था कि मेजर डाइवर्जेंस इन परफॉर्मेंस इज कमिंग. स्टॉक चॉइस, स्पेसिफिक चॉइस, ऑसम चॉइस करने वाले ही बढ़िया कर पाएंगे. रेगुलर एवरेज होल्डर मींस दोज हु जस्ट एवरेज एट एनी प्राइस, any stock they buy, the strategy is not going to work. Now I'll come to close this and come to the Nifty. And Nifty में 125 minutes ये रहे chart. Once again let me hide it. Hide करना चाहिए to apply this one. Now I'll apply the option master tool. सॉरी, ऑप्शन मास्टर टूल मुझे फिर से और एक बार सेटिंग से जाके अप्लाई करना चाहिए क्योंकि एक्सपायरी होगी. ये जो करेक्ट एक्सपायरी डेट सिलेक्ट करना पड़ता है, तो करंट एक्सपायरी डेट आई थिंक विल बी
and it is 8, 8 and 15. Is it 15 or 16 exact date? I think it's 15. Yes, it is 15. तो 15th एक्सपायरी डेट सही लगाना पड़ता है. आप चाहो तो फ्यूचर कर सकते हो, जैसे 15 के जगह 22 डाल सकते हो. It is fine unless you want to look at specifically at the meter. तो अभी के लिए मैं इसको 15 तारीख जो कि नेक्स्ट एक्सपायरी है उस पे लगा देता हूं. ट्रेड जो चल रहा है अभी दैट इज बियर पुट स्प्रेड चल रहा है, और बियर को 2 पुट स्प्रेड चल रहा है, मतलब बाई के साइड 2 ऑप्शन शॉर्ट करके ट्रेड चल रहा है, दैट इज बियर कॉल स्प्रेड. यानी हम लोग कॉल बेच के कमाई कर. ये बियर कॉल स्प्रेड मेरे सेटअप में चालू हुआ है कल से चालू हुआ है एक, और आज एक फर्दर सेल ऑफ का सिग्नल आ रहा है कि 24,500 के आसपास we can think about taking some positions. Overall मूड जो है, माहौल जो है, दैट इज थोड़ा बियरिश में शिफ्ट हो गया है इन द शॉर्ट टर्म चार्ट. सो इतना दिनों तक हम लोग लार्जली क्या कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे बुल पुट स्प्रेड, और आज हम लोग शिफ्ट हो गए हैं बियर कॉल स्प्रेड. So that's all friends on the Nifty technical side of the discussion. Carefully trade कीजिएगा, carefully invest रहिएगा. Not every stocks are going to perform. The best wishes friends from my side, and as always, happy trading.